नमस्कार। IDSA की एजुकेशनल सीरीज डायरेक्ट सेलिंग व्हाट इट इज एंड व्हाट इट इज नॉट के सेकंड सेशन में आपका स्वागत है। आई नो देयर हैव बीन टू मेनी टेक्निकल इश्यूज व्हिच वी आर डीलिंग विद। शायद हम सभी अभी टेक्नोलॉजी को सीख रहे हैं, जांच रहे हैं। और सबसे पहले मैं बिजॉन सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारे व्यूअर्स जो हमारे साथ जल्दी जल्दी जुड़ते जा रहे हैं, उनकी रेफरेंस के लिए मैं बता दूं, बिजॉन सर इज ट्रैवलिंग हैदराबाद से आप चेन्नई ट्रैवल कर रहे हैं एंड सर हैज बीन काइंड एनफ जल्दी जल्दी होटल पहुंच के अभी तक सर सेशन भी नहीं हुए हैं और ही हैज जॉइंड आवर सेशन लाइव। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम सर एंड फॉर द रेफरेंस ऑफ आवर व्यूअर्स हु हैव जॉइंड अस लाइव, बिजॉन सर एंड कंज्यूमरिज्म, ये दो शब्द जो हैं एक दूसरे के पर्यायवाची या सिनोनिम्स हैं। जब जब भारत में कंज्यूमर के हितों की बात होगी, बिजॉन सर का नाम उस डिस्कशन में, उस परिचर्चा में जरूर आएगा। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, क्योंकि बिना इनके योगदान की बात करें, हम भारत में कंज्यूमर के हितों की बात सोच भी नहीं सकते हैं। अपने जीवन के 35 से ज्यादा साल बिजॉन मिश्रा जी ने कंज्यूमर के हितों की रक्षा के लिए लड़ते हुए लगाए हैं। एंड आई थिंक अगर मैं सर का इंट्रोडक्शन देने पे आऊंगा तो 40 मिनट का हमारा ये सेशन जो है सर के इंट्रोडक्शन में ही खत्म हो जाएगा सर। सो आई टेक दिस लिबर्टी ऑफ नॉट इंट्रोड्यूसिंग यू एनी फर्दर। माफ कीजिएगा सर, एंड विल स्ट्रेट अवे। एंड देन ऑफ कोर्स यू नो श्री विवेक कटोच, the chairman of IDSA, who is again, I'm thankful to him. He's returning from airport and he's joined from his vehicle, from his taxi. Thank you so much, Vivek sir, for joining us for this session. So before we start, before we straight away jump to the main key points of discussion, Vivek sir, any opening remarks from your side? Thank you, Chetan, and thank you, Bejon sir, for joining us. And as everyone is aware, the purpose and the objective of this series, and just for your information, Bejon sir, the purpose of this series is just to educate our direct sellers, tell them about what is the direct selling law, what is the requirement of the law, and what's happening. Being a consumer, whenever you look for some law, what are the do's and don'ts you should keep in your mind while you joining with any company. और दूसरा सर ये भी था कि आजकल बहुत सारे फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स आ रहे हैं, एमएलएम स्कैम्स चल रहे हैं, स्कीम्स चल रही हैं। सो बीइंग एन अवेयर कंज्यूमर, एक कंज्यूमर जो कि एक डायरेक्ट सेलर है या डायरेक्ट सेलर जो कंज्यूमर। So I think there's some technical issue at I can't Vivek. hear him. Yeah. There's some technical issue at Vivek's end, I believe. But I think the point that he's trying to raise was, sir, that a lot of issues are coming up because in our industry, ours is probably a very unique industry in the sense that though consumer and direct sellers are two different entities, but in majority of the cases, eventually the differentiation blurs out. The one who is our direct seller eventually is our consumer, and one who is our consumer eventually becomes our direct seller. So this is probably the limited point that Mr. Vivek Katoch was trying to raise. So without wasting any further, sir, let's start on with this session. So sir, my first question would be around the Consumer Protection Act 2019. So for the reference of our viewers, जितने भी लोग हमारे साथ सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं और जल्दी जल्दी जुड़ते जा रहे हैं, भारत में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को अधिसूचित किया गया था। और ये जो था हमारा पुराना जो कंज्यूमर एक्ट था 1986, उसकी जगह पर ये एक्ट जो है नोटिफाई हुआ है। लगभग 33 साल लगे हमें अपने इस एक्ट को, जो कि जिसको मैं समझता हूं कि इकोनॉमी का बैकबोन है। देखिए, कंज्यूमर और कंज्यूमर की स्पेंडिंग से इकोनॉमी चलती है, और इसीलिए एक कंज्यूमर के हितों के लिए जो एक एक्ट है, मैं उसे मानता हूं कि वो देश की इकोनॉमी का बैकबोन है। तो हमारे देश की इकोनॉमी के इस बैकबोन के एक्ट को अपडेट करने में हमें 33 साल लगे। कंपेयर टू अदर इकोनॉमीज की बात करें, जैसे सिंगापुर, उनका एक्ट 2003 में आया था, और पर उन्होंने हर 3 साल में 2009, 12, 16, 18 में उसको अपडेट किया। मलेशिया का एक्ट 1999 में आया था, बट उन्होंने 2002, 3, 7, 15, 17, 19 में उसको अपडेट किया। भारत में आप देखेंगे कि हमने बहुत पहले ये रियलाइज कर लिया था कि कंज्यूमर के हितों की रक्षा जरूरी है, और इसीलिए हमने 1986 में ही इस एक्ट को लाए थे। और मैं अपने रेफरेंस व्यूवर्स के रेफरेंस के लिए बताना चाहूंगा कि बिजॉन मिश्रा सर का इसमें बहुत बड़ा रोल था, हम इनसे आगे जानेंगे भी। सो बिजॉन सर, क्लियरली इंडिया में हम लोग अवेयर बहुत जल्दी थे कि कंज्यूमर के हितों के लिए हमें कानून की जरूरत है, बट हम शायद समय के साथ उसको अपडेट नहीं कर पाए जितना तेजी से बाकी देशों ने उसको अपडेट किया। बट एज वी सेड, better late than never, or better late than sorry. Finally the new CPA is here, sir.
आपकी ओपिनियन क्या है सर? व्हाट आर द बिगेस्ट डिफरेंसेस बिटवीन द ओल्ड 1986 एक्ट एंड दिस न्यू एक्ट, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू कंपनीज एंड सेलर्स, वो अपने कंज्यूमर के साथ जिस तरह से डील करते हैं, उसके रिगार्डिंग सर बिगेस्ट डिफरेंस क्या है आपकी ओपिनियन में? सर, ओवर टू यू. Thank you. Thank you. First, let me thank Vivek and also thank all the members of IDSA and Chetan for inviting me to join this session. So, सबको नमस्कार, जितने लोग जुड़े हैं और भाग ले रहे हैं इस परिचर्चा में, हम सबको नमस्कार करना चाहते हैं और माफी भी मांगना चाहता हूं कि किसी टेक्निकल कारण, वेदर के चलते चेन्नई में flight got delayed. I got delayed reaching the venue to start this session. However, we have connected. Where there is a will, there is a way. So I believe in that. और ये हो चुका है. अब हम आएंगे मुद्दे पे straight away. The 1986 में जब हम लोग कानून लाए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, हम लोग का केवल एक ही लक्ष्य था कि कोई भी व्यक्ति यदि गलती करता है, हम उनके ऊपर फाइन नहीं चढ़ाना चाहते हैं, हम उनको जेल नहीं भेजना चाहते हैं. हम केवल चाहते हैं कि यदि कोई क्षति हुआ है उपभोक्ताओं को, उस क्षति का पूर्ति होनी चाहिए. कॉम्पनसेशन. द होल philosophy of the Consumer Protection Act of 1986 was, how do you compensate the consumer for the damage caused or remove the defect of a substandard product and make the product as per the best quality, was the philosophy behind the Consumer Protection Act 1986. और तुरंत समाधान, हम लोग उस कानून में फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड इस ढंग का एक कानून आया जहां पर हम लोग ये बताए कानूनी तरीके से कि 45 डेज में निष्कासन होनी चाहिए, और यदि लेबोरेटरी वगैरह भेजना पड़े तो 90 डेज में हो. तो हम लोग एक टाइमलाइन बांध दिए कि 45 डेज में इसका निष्कासन होना चाहिए. लेकिन जो अनुभव हुआ 1986 से 2-3 अमेंडमेंट्स किए हम लोग, और हम चेतन को बताना चाहेंगे कि इंडिया वाज आल्सो वेरी प्रोएक्टिव इन अपडेटिंग द लॉ टाइम टू टाइम. हम लोग 3 अमेंडमेंट्स लाए थे इस कानून में, लेकिन 2019 में सरकार ने यह निर्णय लिया कि हम लोग एक कंप्लीटली नया कानून लाएंगे उपभोक्ताओं का संरक्षण को लेकर. सो 2019 में बिल्कुल एक न्यू लॉ आया, और इसलिए लाया गया क्योंकि कई चीज हम लोग रूल्स में नहीं ला सकते हैं, कानून में संशोधन होनी चाहिए. तो इसलिए सरकार ने ये निर्णय लिया कि टाइम टू टाइम अमेंडमेंट क्या करें. अब हम लोग एक नया कानून ले आए, और ये हमारे प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट, उनके मतलब से ये नया कानून बने. सो 2019 में हम लोग बिल्कुल पुराने कानून को बदल कर एक नया कानून ले आए. क्यों लाए? क्योंकि कई चीज नहीं था. जैसे सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, हम लोग एक रेगुलेटर लाए जो पहले नहीं था, क्योंकि हम लोग ये महसूस किए कि लॉ तो बन जाता है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बहुत पुअर होता है, और इम्प्लीमेंटेशन को और एफिशिएंट और इफेक्टिव करने के लिए एक रेगुलेटर का जरूरत है. तो हम लोग सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी 2019 के कानून में ले आया. फिर हम लोग लाए प्रोडक्ट लायबिलिटी, हम लोग लाए मीडिएशन, ये कई नए नए मॉडर्न तरीके, क्योंकि सब लोगों को मालूम है अब टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. और उसी के चलते ऑनलाइन जो ई कॉमर्स को इसके दायरे में लाए, डायरेक्ट सेलिंग को इसके दायरे में लाए, जो नहीं था पहले. एंड एज यू ऑल नो, वी हैव बीन वर्किंग फॉर अ एक्सक्लूसिव लॉ फॉर डायरेक्ट सेलिंग सिंस 1996. हमको याद है 1996 में फर्स्ट टाइम हमारा मतलब IDSA के साथ मुलाकात हुआ, और जब हम IDSA के ऑफिस बेरर्स से मिले तो हम लोगों का केवल एक ही लक्ष्य रहा कि एक स्टैंडर्ड बने, ताकि जो फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स, जो विवेक ने कहा, कैसे डिफरेंशिएट करे, कैसे कंज्यूमर को एम्पावर करे कि कौन डायरेक्ट सेलर है और कौन सब स्टैंडर्ड या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनके तहत डायरेक्ट सेलर का बदनाम हो रहा है. सो in order to strengthen the direct selling format in India, and as we all know, विवेक भी एग्री करेगा और चेतन भी एग्री करेंगे, और सारे डायरेक्ट सेलर्स जो IDSA के मेंबर्स हैं वो लोग एग्री करेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग इज अ वेरी
acceptable format all over the world by the consumers, and it is very popular all over the world. So why can't we make direct selling a popular kind of a format for reaching out to the consumers with the best quality product? तो इसी को देखते हुए हम लोग सरकार को कन्विंस किए कि एक एक्सक्लूसिव कानून होना चाहिए. अब 2019 के पहले हम लोग एक गाइडलाइन लाए थे इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, आप लोगों को याद होगा, लेकिन उसको सही रूप देने के लिए हम लोग अब ये रूल्स में ले आए हैं और डायरेक्ट सेलिंग रूल्स बन गया है 2021, जिसके तहत हम लोग एक स्टैंडर्ड बनाए हैं. अब ये स्टैंडर्ड जब बनाते हैं तो कंज्यूमर थोड़ा निश्चिंत हो जाता है कि अब हम लोग एक ऐसे दायरे में काम कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग में उन लोगों के साथ काम कर रहे हैं जो स्टैंडर्ड को लेकर आगे बढ़ रहा है. क्योंकि हर कंज्यूमर चाहता है कि जो भी चीज हम खरीदते हैं वो एक स्टैंडर्ड के दायरे आए, ट्रांसपेरेंसी आए, अकाउंटेबिलिटी आए, इंफॉर्मेशन सारा उस ढंग से मिले जो कंज्यूमर चाह रहा है. ये सारे चीज उस कानून, इस डायरेक्ट सेलिंग बाई लॉज में हम लोग ले आए, जो गाइडलाइंस अभी कानूनी तरह हम लोग लाए हैं 2019 के कानून के तहत. तो मेरा ये कहना है कि डायरेक्ट सेलिंग is one of the best and most friendly format in the world in the interest of the consumers. I believe commercial activity depends on relationship building, and there is nothing better than direct selling because केवल एक इंटरमीडियरी जो होता है, जो बीच में आते हैं, वो भी कंज्यूमर है, जिसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं. वो डिस्ट्रीब्यूटर पहले प्रोडक्ट खुद खरीदते हैं, यूज करते हैं, उसके फायदे महसूस करते हैं, फिर उसके बाद वो लोगों को बताते हैं कि उनके जो भी मतलब कॉन्टैक्ट्स में है, उनके इन्फ्लुएंस में है, उनके परिवार के लोग, उनके दोस्त, उनके कम्युनिटी, वो सारे लोगों को जोड़ते हैं उस क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ. और डायरेक्ट सेलिंग का पूरा फिलोसफी भी इसी पे है कि जो कंज्यूमर है वो कल बाय वर्ड ऑफ माउथ उस प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, ताकि एडवर्टीजमेंट में हम लोग पैसा ना खर्चा करें, हम लोग प्रोडक्ट क्वालिटी में ज्यादा खर्चा करें. डायरेक्ट सेलिंग का द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो होता है कि कम से कम एडवर्टीजमेंट पब्लिसिटी हो, मैक्सिमम वर्ड ऑफ माउथ में इनका प्रचार हो, और उसी को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं. जैसे हम कह रहे हैं कि जब परिवार के लोग होते हैं एक ही साथ एकत्रित होकर एक रिलेशनशिप बनता है, वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग में भी एक रिलेशनशिप बनता है. और आप लोगों सबको मालूम है कि कभी भी कोई रिलेशनशिप जब बनता है तो कभी कभी वहां पे थोड़ा नाखुश भी कभी कभी लोग हो जाते हैं. सो डिस्प्यूट होना अनिवार्य हो जाता है, लोग कभी कभी खुश नहीं होते हैं किसी चीज के साथ, तो उसके लिए भी एक तौर तरीका तंत्र बनता है. और हम लोग परिवार में देखते हैं कि हमारे जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो लोग उसको बैठकर सलटाते हैं और एक आर्बिट्रेशन, एक मीडिएशन करके उसका निष्कासन निकालते हैं. हर चीज के लिए हम लोगों को कानून को यूज करने के लिए केवल जुडिशियल सिस्टम में नहीं जाना चाहिए. हम विश्वास ये करते हैं कि यदि कोई भी डिस्प्यूट होता है तो हम लोगों को बैठकर उसको सलटाना चाहिए, उसका निष्कासन निकालना चाहिए. तो इसी ढंग से हम समझते हैं कि यदि डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में उसका यदि प्रचार ज्यादा हो और डायरेक्ट सेलिंग को हम लोग यदि सही ढंग से आगे ले जा सके, जिसको हम लोग कहते हैं एथिकल मार्केटिंग, एथिकल मार्केटिंग को अपना के जो हम लोग जो भी बनाए हैं सरकार, आज हम देख रहे हैं कि उसमें भी लोग चाहते हैं कि कुछ बदलाव हो, डेफिनेशन में क्लैरिटी आए. और हम इस चीज में विश्वास करते हैं कि हर प्रॉब्लम बैठकर हम लोग सलटा सकते हैं. ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सलूशन नहीं हो सकता है. तो हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसका हम लोग बहुत जल्दी से जल्दी उसका सॉल्यूशंस निकालेंगे, और आईडीएसए को लीडरशिप देनी चाहिए इसके लिए. और द बेस्ट लीडरशिप इन माय व्यू is that you should encourage your members to bring in voluntary mechanism in terms of वो लोग कानूनी तरीके से काम तो करते ही हैं, लेकिन
कानून से भी ज्यादा कैसे वो लोग क्या कर रहे हैं, ये अपने अपने कंज्यूमर के पास उस बात को पहुंचाए कि वो केवल कानून नहीं, वो कानून से भी ज्यादा काम कर रहे हैं। वो उसको आप लोग कहते हैं वॉलंटरी इनिशिएटिव, और वो वॉलंटरी इनिशिएटिव शुरू होनी चाहिए। जी चैतन जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ जी सर, मैं आई वाज जस्ट अबाउट टू इंटरवीन इन द सेइंग दैट यस, इस पे भी मेरा एक आपसे प्रश्न था, वो मैंने बात के लिए रखा हुआ था, बट क्योंकि अभी चर्चा उस पर प्रारंभ हो ही गई है, तो मैं उस प्रश्न को पहले ले लेता हूँ सर। जैसा कि अभी हम हाल फिलहाल में पिछले कुछ वर्षों से, विगत वर्षों में हमने देखा है कि भारत सरकार जो है एक सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म पे बड़ा जोर दे रही है कि इंडस्ट्री शुड कम फॉरवर्ड, ना केवल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बट टू अदर जो इंडस्ट्रीज हैं बाकी, वो भी एक सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म लाए, ताकि इंस्टीट्यूट जो भी हमारे डिस्प्यूट्स हैं कंज्यूमर्स के या डायरेक्ट सेलर्स के, वो उस सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म के माध्यम से हल हो जाए। हमने देखा है कि भारत में एडवर्टाइजिंग सेक्टर में खासकर सेल्फ रेगुलेटरी काफी अच्छे से काम कर रही है, संस्था बनी हुई है जिसके आदेशों को माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी मान्यता मिलती है, काफी केसेस में हमने ये देखा है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए सर, आपकी ओपिनियन में सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म की क्या सिग्निफिकेंस रहेगी, क्या सेंस बनती है, इंडस्ट्री को इस दिशा में काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो किस तरीके से मॉडल कुछ काम कर पाएगा सर? आपकी ओपिनियन जाननी थी। देखिए, अभी हम लोग के जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप, in terms of reducing the pendency in the judicial system, हर कॉर्नर से अब वो आउटक्राई आ रहा है कि ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म हम लोग को डेवलप करना चाहिए। और मैकेनिज्म बहुत सिंपल है। कभी भी कोई भी कंज्यूमर यदि अनहैप्पी होता है तो उनको जुडिशियल सिस्टम में तुरंत नहीं जाना चाहिए, उनको पूरा एग्जॉस्ट करना चाहिए। जो इंटरनल मैकेनिज्म अवेलेबल है, जो मैन्युफैक्चरर है, हुएवर इज द मैन्युफैक्चरर, द डीलर, द इंटरमीडियरीज, all these people should first try to sit down with the consumer and resolve the dispute as quickly as possible without any delay. And that should be the mission in the years to come. And this is what the present government under the leadership of Modi ji wants, that हमारा जो पेंडेंसी बढ़ रहा है, हम लोगों के देश में जो पेंडेंसी बढ़ रहा है इन टर्म्स ऑफ जुडिशियल सिस्टम, जो सालों लग जाते हैं, it is not only cumbersome, it is very expensive, it is long drawn. So in order to reduce that, the government is very keen that all the industry, especially like direct sellers, you all should bring in an internal mechanism of dispute resolution. You all should adopt the process of mediation. You all should encourage to appoint ombudsmen, trained mediators, to be part of your system, to be part of the organization. Because abhi hum haal mein Odisha mein we conducted a training program for the mediation for mediators who have been selected by the district commission and state commission. So my contention is we all should try to bring in this skill set of mediation, the skill set of a good ombudsman, and make them part of the direct selling infrastructure. Because in my view, if you don't encourage prompt redressal of disputes, it will lead to a lot of complications, which we know how it has hampered the growth of direct selling in India. So we should not allow cases to be put before the judicial system until unless we have exhausted all the processes which are made available. We should go to the judicial system as per our constitution only when we have failed to come to a settlement through mediation. So this is what I feel is the way ahead, and we all should work towards that, and we should make it happen. Because कानून जो गाइडलाइंस जो बन गया है, जो हमारे अभी डायरेक्ट सेलिंग का अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019 जो रूल्स बन गए हैं, उसको लेकर उसको एक स्टैंडर्ड बनाकर उस स्टैंडर्ड से भी बेटर हम लोग कैसे कर सकते हैं, ये बैठकर हम लोग को एक उसका मतलब सॉल्यूशंस निकालना होगा, एंड वी हैव टू मूव फॉरवर्ड. एंड दिस इज व्हाट आई बिलीव वेरी फर्मली,
that it is possible and it should be tried out, and we should do it in a very professional manner. As I mentioned to you, induct trained people, induct people who know this business of how to sit and mediate between the manufacturers, the distributors, and the end users, and how to make direct selling a household name in the coming years, so that not only direct selling becomes a good competitive format in the marketplace, but gives the best value for money to the consumers. In my view, this is possible and we should work towards that. And IDSA is the best organization, in my view, to provide this leadership. People like Vivek, who has been giving such a great, kind of outcomes out of their business. Their consumer base is increasing so rapidly. No consumer base can increase without focusing on quality and best of quality of services. And that goes to prove that organizations like what Vivek represents are doing that work in a very consumer centric manner. And I'm sure all the members of IDSA are together on this, and they're day and night working together to improve the quality of service in the direct selling arena, not only in India but also overseas. And I know that today we are not only in India. Today, direct sellers from India are also working in Middle East, working in Southeast Asian countries. They are expanding. So we have to go global. Like companies from US are working in India, or companies from Europe are working in India. Like that, our homegrown brands in India can start working in other countries. And it can Right, sir. only happen when we bring in good structural reforms in terms of complaint redressal, feedback from consumers, continuous improvement in quality, bringing in innovation, bringing in technology. These are today the buzzwords. And Right, I'm sir. sure IDSA will provide that leadership. Thank you, sir. Yeah, sure. We are trying our level best, sir. And before I take up our last question with you, since Vivek sir has joined, I hope you have reached home safely, sir, and you didn't drive too rashly just to join the session. So we were just discussing before you left. So we're discussing about SRO. As you know, sir, that government is pushing for industries to adopt SRO, self-regulatory organization, some sort of or self-regulatory mechanism. So you think that a similar mechanism makes sense for direct selling going forward? What's your view on it, sir? I think SRO is the welcoming step, and what we have observed, not only in India, I think global US, who's number one market at the moment when it comes to a direct selling, they also have a SRO. But having SRO with some powers, without any teeth, having SRO doesn't make sense. So I think the one is to have a SRO, and secondly, how the other member companies who's operating in direct selling can join this SRO, so that discipline can be enforced throughout the industry. So I see that is one as a challenge, and the decision made by the SROs, in case some companies violate some of the provision and the binding of the decision by SRO, it could probably be a challenge. But it's a welcoming step, and I think we should also work with the relevant or the competent ministry to understand. As John sir said, there should be some, remedies available. The says we should not straight away go to the courts. We should exhaust the available remedies to us, and probably could be the company itself, as per the regulation. The company has 30 days time frame. Most of the companies have the ombudsman as well. In fact, IDS is also having the ombudsman in case of any complaint. Any with the member companies, direct sellers or the consumers can directly reach out to IDSA. But having SRO, I think it's I also feel, and but I think bringing all the industry under one umbrella Yes, sir. probably could be a challenge at this moment.
because sir knows that our membership is only limited to 18 companies, and that to some reason because our strict codes are quite strict, and it's in line with the global. And I think, yeah. So, Right, sir. Chetan, certainly we should work towards that. Let's. Sure, sir, sure. And I Yeah. think since sir has already raised this point about ombudsman, so for the benefit of all our viewers, IDSA has a code administrator, and all our member companies are duty bound to follow this code. And this code is not limited to dealing between companies only. As a consumer or as a direct seller, if you have any issue with respect to any IDSA member company, आप हमें शिकायत भेज सकते हैं। 15 दिन के अंदर हमारे कोड एडमिनिस्ट्रेटर उस इशू को रिजॉल्व करेंगे, और हमने पास्ट में रिजॉल्व किए भी हैं। सो दिस इज वन ऑफ द initiative from our side, Bejon sir, which we are already doing. But as Vivek sir said, this is limited to IDSA members only. So we'll take up the last question, sir. I know, sir. Before you Before take that, the last maybe you question, can. no, sorry. Go ahead, Vivek. So, before we take up the last question, I think the ministry initiative of the grievance helpline, maybe you can tell our Ji. viewers, and most probably I can see some of the companies which are not member, they are also viewing our program. What is this government initiative and how we can participate with the government? Maybe you can throw a light on that. Yeah, sure. So I'll just quickly, very briefly, describe you, and I'm sure, Bejon sir, please feel free to correct me if I'm going wrong anywhere. So it doesn't matter if it's an IDSA member company or it's a non-IDSA member company. Every direct selling company has to register with the National Consumer Helpline under a process which is called convergence process. आपको अपनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से पूछना चाहिए कि क्या उन्होंने अपने आप को एनसीएच में रजिस्टर किया है या नहीं है। इनफैक्ट आई वुड गो टू द लेंथ एंड से कि आपको डायरेक्ट सेलिंग कंपनी वही ज्वाइन करनी चाहिए जिसने ये रिक्वायरमेंट पूरी करी हो। बेसिक फिल्टर। इसमें होता क्या है, अगर आपका कंपनी से रिलेटेड कोई भी ग्रीवियंस है, आप एनसीएच की वेबसाइट पे जाके उसको रेज कर सकते हैं, एंड आपके बिहाफ पे गवर्नमेंट उस कंप्लेंट को फॉरवर्ड करती है कंपनी को, और कंपनी फिर ड्यूटी बाउंड हो जाती है एक टाइमली मैनर में उसको रिजॉल्व करने के लिए। सो यू मे ऑल विजिट नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन एंड यू शुड ऑल गेट बैक टू योर डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज, और आप उनसे पूछिए कि क्या आपने अपने आप को एनसीएच में रजिस्टर किया है या नहीं किया है। So with this, I know Bejon sir काफी थके हुए भी होंगे। I just want to add something to. Chetan, I just want to add something to what Vivek mentioned. You see, the most important aspect is the taste of the pudding is in eating. We all have to understand that how do we develop mechanisms which are trustworthy, which is very, very important. So the most important aspect is that you should engage with professionals within your organization. You should engage with them to recruit them, to be able to very efficiently bring redressal to any kind of a complaint which comes to you first, rather than taking it anywhere else. So the first thing is we need to find ways to bring in resolutions as soon as it occurs within the company and within the company's framework. And that is the SRO's motive, which is operating in US. Now, what I want to learn from the US model is that they engage professionals to work for them. That is number one. Number two, the teeth comes only when you deliver. If you deliver good outcomes, you will find automatically you will get the teeth, because the judicial system in India also will start accepting the existence of SROs within the direct selling business. And I have seen, you gave the example of ASCII, for example. In the various courts today, the judicial system is directing the complainant that first you go, you exhaust the ASCII process, and then you come before us. So they are started directing them. So the teeth automatically has come to ASCII, even if there is no law which is binding them, which is binding the consumer. So what I want to tell Vivek is the teeth will come only when we show our strength, that we are honest, we are committed, and we are doing it very professionally. The moment you follow a proper system, then the judicial system will itself give you the teeth, and they will start quoting you, saying that आप यदि हमारे सामने आ रहे हो,
आप पहले जाकर वहां एग्जॉस्ट करो उस प्रोसेस को, फिर आप हमारे सामने आओ. So automatically you will get the recognition. So this is what I'm trying to tell. I wanted to add on to what Vivek mentioned, that Right. we have all the powers to get that teeth. And as you very rightly said, you have 18 members only because you are very strict with your code of conduct. And because you are strict with your code of conduct, others are not able to come. And that is what is differentiating IDSA with others. So we all have to say, I'm not saying that one is good and one is bad. What I'm trying to say is that हर एक संस्था का एक माप तोल का एक नियम होनी चाहिए, हर एक संस्था का एक कोड होनी चाहिए, हर एक संस्था का कोड का इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, which should be transparent, accountable and very very credible and trustworthy. So हर एक संस्था जो भी डायरेक्ट सेलिंग में है, जो भी एसोसिएशंस हैं, बाहर जाओ. सबका एक कोड होना चाहिए. तो आईडीएसए जैसे स्ट्रिक्ट है, हम सोचते हैं इस पे कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्वालिटी इज पैरामाउंट. यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी. यू हैव टू मेक श्योर दैट योर कोड इज फॉलोड by letter and spirit. And I appreciate IDSA only because of that factor, that they don't compromise on their quality. They have even requested members to leave the fraternity or leave the association where they found that the member is not following the code. So many people have also come and gone, but the true spirited people in direct selling in the country are today members of IDSA. And I feel very strongly that more and more members should get inducted into IDSA if they are agreeable to that code, or form a code for whatever association you are a member of, and compete with each other in a very transparent and open manner. जी सर. सो हमारे व्यूवर्स के रेफरेंस के लिए, अगर आप भी हमारे आईडीएसए के कोड ऑफ एथिक्स को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप आईडीएसए की वेबसाइट www.idsa.co.in पे जाके कोड की कॉपी डाउनलोड करके आप उसको पढ़ सकते हैं. बिजॉन सर, लास्ट क्वेश्चन फॉर द सेशन, एंड आई नो यू आर वेरी एग्जॉस्टेड एंड यू विल हैव टू टेक सम रेस्ट आल्सो. No, I don't need any rest. I get energy out of such conversations. Great, sir. So, sir, कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट 2019 पे वापस आते हैं. सर, क्लॉज नंबर 247 के अंदर एक 2.5 पेज की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की डेफिनेशन दी गई है. 3 वर्ड्स हैं सर, पर ऑलमोस्ट 3 पेज की डेफिनेशन है. इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट सेलर्स जो हमारे इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, व्हेन दे इंटरेक्ट विद कंज्यूमर्स, इस डेफिनेशन की क्या इम्प्लीकेशंस है? इन लोगों को क्या समझना चाहिए कि वो डेफिनेशन इनको क्या करने देती है और क्या करने से रोकना चाहती है? इस पे आपकी सर क्या ओपिनियन है? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस. चेतन, हम एक चीज में बहुत विश्वास रखते हैं सर. आप कोई भी कानून बना लो, कोई भी डेफिनेशन ले आओ, मुस्कुराहट लाना चेहरे पे कंज्यूमर का इज द की. If the consumer is happy and consumer goes back smiling, then your code has been implemented, the law has been implemented, that 4-page or whatever you are describing, that is implemented. My short point is, you see, kabhi bhi definition ko tod mod nahi karna chahiye. There should be clarity brought in. And what I have been able to understand, that there is a lack of clarity in terms of understanding the format of direct selling. We all have to understand that there is a global definition. We have to go with that global definition. We cannot say that India is different from the world. All over the world, laws are getting harmonized. हम लोग बैठकर फूड स्टैंडर्ड्स को हार्मोनाइज कर रहे हैं, हम लोग बैठकर ट्रेड एंड कॉमर्स को हार्मोनाइज कर रहे हैं, हम लोग सारे वर्ल्ड के लॉज को एकत्रित करके एक साथ बैठकर उसको हार्मोनाइज कर रहे हैं. हाउ कैन इंडिया ब्रिंग इन अ डिफरेंट डेफिनेशन फॉर द सेम एक्टिविटी which is happening all over the world? So we have to sit down and figure out where that clarity is required, how we can bring that clarity. And my only request to IDSA members is that please try to figure out that we don't get into any kind of a controversy where we are interpreted as violating the law or violating the guidelines which has been given. In some way or the other, we have to ensure
that we don't violate any kind of a provision, because you see कई past activities को देखते हुए, कई past अनुभव को देखते हुए ये डेफिनेशन बना है. तो हम लोग को ये सोचना पड़ेगा कि जो हम लोग सीखे हैं पास्ट से, उससे हम लोग कैसे क्लैरिटी ला सकते हैं. और बैठकर, आई रिमेंबर आई हैव बीन पार्टी टू मेनी इंटरनेशनल नेगोशिएशंस in terms of harmonization of the law to do with drugs, to do with medicines, to do with food. And हम लोग जब बैठते हैं और negotiate करते हैं तो घंटों, दिनों, महीना, सालों लग जाते हैं to bring that definition in place. You know, if shall and should को लेकर हम लोग 3 साल बहस किए, तो उसी ढंग से हम लोगों को ये जो डेफिनेशन में जहां पर क्लैरिटी का जरूरत है, हम उम्मीद करते हैं और हमको विश्वास है कि ये प्रेजेंट गवर्नमेंट विल 100% look into our issues in terms of bringing the clarity in the interest of the consumer, because that department is supposed to work in the interest of the consumer. So we have to bring in that clarity in the interest of the consumer so that the direct sellers in the country can give the best of service to the consumer without any hesitation. आज भय आ गया है लोगों के अंदर कि हम क्यों डायरेक्ट सेलिंग करें जबकि हमारा ऐसा ऐसा इंटरप्रिटेशन हो रहा है. ये डर को हटाना है. इस डर को हटाने के लिए हम लोगों को एक ऐसा तंत्र बनाना चाहिए जहां पर लोगों में विश्वास हो, कंज्यूमर को डायरेक्ट सेलिंग से विश्वास हो, और उसके तरफ हम लोग को जाना चाहिए. और जो फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स जो विवेक ने अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा, कैसे लोगों को एम्पावर करें ताकि दे कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द फ्लाई बाय नाइट and a long-sighted, long-vision direct seller who is credible, who is trustworthy, who is, doing things in a ethical manner. वो कैसे हो सकता है इस पे बैठकर, और हम उम्मीद करते हैं, and I am sure चेतन, हम लोग बहुत जल्दी इसका सोल्यूशन निकाल सकेंगे. जिस ढंग से हम लोग अब एक कानून का एक तंत्र ले आए हैं डायरेक्ट सेलिंग में, हम लोग बहुत जल्दी डेफिनेशंस का क्लैरिटी भी ले आएंगे. लेकिन हम लोगों को भी कुछ ना कुछ ऐसा कदम लेना चाहिए, जैसे एसआरओ की इनिशिएटिव, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन को स्ट्रेंथनिंग, कोई ना कोई इनिशिएटिव ऐसा करना चाहिए जिससे सरकार को भी एक विश्वास पैदा हो सरकार के अंदर में कि ये डायरेक्ट सेलर्स कुछ बदलाव लाना चाह रहा है, कुछ ऐसा वैल्यू एडिशन लाना चाह रहा है जो हो सकता है वर्ल्ड में नहीं हो लेकिन इंडिया में है. वो क्या वैल्यू एडिशन हो सकता है? लेट अस थिंक ऑन दोज, एंड आई एम श्योर वी कैन फाइंड आउट लॉट ऑफ इनोवेटिव आइडियाज इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट, बिकॉज इंडिया इज द हब. इनफैक्ट सारा टेक्नोलॉजिकल जो इनोवेशन हो रहा है वर्ल्ड में वो हमारे इंडियंस कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो व्हेन माय इंडियंस कैन डू इन अमेरिका, व्हाई कांट द इंडियंस डू इन इंडिया? सो लेट अस इनवाइट आवर इंडियंस all over the world to come and join the direct selling business, to help us to trigger direct selling not only in India but in the world. And I'm sure there are a lot of youngsters, I know a lot of youngsters who are very keen to work in India, to help the industry to grow in India. Let's invite them. Let's do some kind of a campaign in inviting them. Right, sir. Right, sir. Sir, इसी से एक I'm sure our direct sellers also have this in their mind. हाल फिलहाल में सर there's a lot of discussion happening on dark patterns and the importance of issuing invoices. So इस पे सर आपकी what's your opinion? What exactly are dark patterns and in terms of direct selling किस तरह से हम इसको identify कर सकते हैं? आप कोई भी परिभाषा दे दो, कुछ भी आप डेफिनेशन ले आओ, हमारे आम आदमी इसको नहीं समझेंगे. आम आदमी का समझने के लिए हम लोगों को केवल एक ही चीज समझना है कि भ्रामक विज्ञापन नहीं होनी चाहिए, डिसेप्टिव मार्केटिंग नहीं होनी चाहिए. आप ये नहीं कर सकते हो कि हम यदि कोई एयरलाइन का सीट लेना चाहेंगे, हम जब सीट लेने जाएंगे हम देख रहे हैं कि सारे सीट आप प्राइस कर दिए हो. क्यों आप सारे सीट प्राइस करोगे और खाली मिडिल सीट छोड़ दोगे? आपको विंडो सीट भी देना चाहिए, आपको आइल सीट भी देने चाहिए जहां कंज्यूमर को वैल्यू मिले. ये नहीं कि हर चीज के लिए आप प्राइस दे दो और जबरदस्ती उनसे पैसे ऐंठने का कोशिश करो. वी हैव टू मेक श्योर
that we build such mechanisms. देखो कोई भी मतलब कमर्शियल बिजनेस विदाउट प्रॉफिट नहीं चलता है. प्रॉफिट इज अनिवार्य. हर व्यापारी चाहता है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उस पे हमको मिनिमम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिले, which is better than parking my money in the bank. That's why bank is also keen to give you money so that you expand your business and you generate employment, you generate growth. And we are looking at 5 trillion economy. When we are looking at 5 trillion economy, direct selling can play a very, very important role, let me tell you. And that important role will come when we stop such deceptive marketing. We have to stop that. ये जो ब्लैक पैटर्न, ये सब जब बात हो रहा है, डार्क पैटर्न्स एंड ऑल दैट, इट इज नथिंग बट जो सालों से एग्जिस्ट कर रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं डिसेप्टिव मार्केटिंग, मोनोपोलीज, कार्टेलाइजेशन, ये सारे चीज को हम लोगों को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की जो डेफिनेशन है, जैसे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, that they also look into unfair trade practice as Consumer Protection Act does. But my contention is that we need prompt relief. We have to always understand that हम एक कोई तंत्र में ना फंस जाएं जहां सालों लग जाएं हमको निष्कासन के लिए. हमको तुरंत उसका समाधान चाहिए. So either the unfair trade practices should go away, or it should be penalized in such a way that nobody gets the guts to do that, which is not happening. कैसे लोगों को हम लोग उनसे बाहर रखें ताकि तंत्र ऐसा बने कि उनको इतना डिटरेंट एक्शन हो उनके ऊपर कि वो कभी उसको आगे सोचे नहीं. हम तो ये देखना चाहते हैं कि कैसे सीसीपीए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन करना शुरू करे, पब्लिक के बिहाफ में जाकर उस ढंग का ऑर्डर्स ले आए जहां पर केवल फाइन लगाने से नहीं चलेगा, उस व्यापारी को उस बिजनेस से बंद करवाना होगा जो अनफेयर है, और उनको कन्वर्ट करना होगा टू अडॉप्ट फेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस. वी हैव टू वर्क इन कन्वर्टिंग पीपल टू प्रैक्टिस गुड प्रैक्टिसेस इन बिजनेस rather than we target them to send them behind bars or punish them in such a way that they again come back and start doing the same business. ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बेल में निकलकर फिर वो काम करना शुरू कर दे. ऐसा हम लोगों को शुरू करना चाहिए कि the deterrent action. So as I was saying that this new concept जो guideline 2 दिन पहले कंज्यूमर डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स जो अभी नोटिफाई किया, हमारा केवल कहना है कि कोई भी कंपनी कंज्यूमर को मिसलीड करके एंड इन अ डिसेप्टिव मैनर उनसे पैसे ना लें जो वो देना नहीं चाह रहे हैं. यदि वो खुशी खुशी मुस्कुराते हुए पैसा देता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यदि वो नहीं देना चाह रहे हैं, आप प्लीज उनको जबरदस्ती मत कीजिए उनके ऊपर, या उनको मिसलीड करके उनसे पैसे मत लीजिए, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड दिस इज वेयर आई वुड लाइक टू अपील टू द डायरेक्ट सेलर्स. यहीं पर आप अपना फर्क महसूस करवा सकते हो लोगों को कि यू ऑल आर वन ऑफ दोज प्रैक्टिशनर्स हु विल नेवर अडॉप्ट any unfair trade practice and say that to the consumer. And if any consumer finds that any kind of activity you are doing which is unfair, you are immediately prepared to rectify that if you are been convinced by the consumer that it is unfair. So there should be a very congenial method of discussion and consultation so that no consumer can ever feel that हमारा बात सुना ही नहीं गया, हमको सुने नहीं, हमको समय नहीं दिया गया, हमारा सुनवाई नहीं हुआ. ये नहीं होनी चाहिए. You see, and this is what I will tell IDSA to do in the coming years, that ऐसा कभी भी किसी को भी एक मौका ना मिले कि हम IDSA के पास गए और वो लोग हमको नहीं सुने, उन लोग हमको अपॉर्चुनिटी नहीं लिया. और if supposing we need mediation, we need a qualified third party to come and mediate, we should engage with professionally qualified competent people. And as I told you, we are doing a nationwide kind of a training program to create youngsters to become good mediators.
in the country. Chetan, you're So muted. sorry, yeah, so sorry, so sorry. I didn't realize I was on mute. So that was indeed some good insights, sir. Thank you so much for sharing with all of us. And we have almost reached close to the duration of the session. So Vivek sir, any final concluding remarks from your side before we take concluding remarks from Bejon sir? Uh, no concluding remark, but I would request Bijon sir to give his inputs from the consumer perspective whenever they interact with any company, or try to use or buy the product of any company, what they should look at. Maybe the labeling part, and the way it has been delivered. So what's your take? What the company should be doing to ensure they are keeping their first to deliver the goods to the consumer, and then on the consumption part. So what's your view, sir? Like, what should consumer demand from the company? I think company should also act in a responsible way. They are also equally accountable. Vivek, you have, you are a, how would I put it? You are a champion. You put a fantastic question. Let me tell you that. You see, my suggestion is, when a consumer comes to you, he has made up his mind to purchase your product. And he has made up his mind to use his scarce money, his hard-earned money, to buy your product. So when he comes to you and buys your product, your only focus should be, is he happy with your product or not? Is he feeling that wow factor while using your product? Like, I'll tell you, I would like to make it public that my family finds the wow factor in many of the companies who are members of IDSA. They always look for it. They crave for it. You see, I'm not joking. I'm personally telling you that many of your products are world class, and the consumers are always wanting to buy it again and again. Never let them go away. This is my message to you all. Keep track of them. Build relationship with them. Build such a relationship with them that they become your spokesperson in the community. Make them so happy that they go and make others happy. My only message is, sometimes we keep forgetting about them. We don't remember them. We don't acknowledge their patronage. We don't acknowledge their loyalty. Imagine, all of a sudden, one day, if somebody gets a call from the managing director of a company, of a product which he is using or she is using, what kind of a feeling that consumer will get when she or he will gets that call? So make that a practice. Make that a. I would appeal to you, Vivek, as the head of an organization, that you should call your consumers every day, at least 5 of them, and find out from them how to improve your product further. Ask them what you wanted, which I have not been able to give you. Ask them that. What more I can give you? Ask them that. And tell your research and development people to adopt those suggestions to make a better product. And that is how direct selling will grow, not only in India, but globally. Right, sir. So, with this, I think, Vivek sir, any point to add from your side? So, Bejon sir, concluding remarks from you. Well, the only concluding remark from me is, such awareness programs are great programs, and I feel very delighted when I get invited, because I get a chance to interact with people who are in such business. I get a chance to interact with people who are listening to me today and will give suggestions that what more a person like me can do, not only for the country but for the industry. I'm very keen to understand that, because if the industry is happy, the consumer will obviously become happy. If I don't keep the industry happy, the consumer can never be happy. So I have to look at both the sides of the coin to ensure
that we grow and we reach the 5 trillion economy as our Prime Minister wants. And I'm sure direct selling can play a very important role in making that happen. All the best to all of you. Thank you, Keep sir. this Thank good you so work much. going. I am always with you all. Thank you so much to both Bejon sir and Vivek sir for taking time out of their schedules. Both of them were busy. Both of them are traveling, and yet they, felt us so convenient to, they joined our session. Thank you so much again. And in terms of concluding remarks from my side, hope you all have, had something to learn from today's session. चाहे वो 1986 का एक्ट हो, चाहे वो 2019 का एक्ट हो, कंज्यूमर के 6 फंडामेंटल राइट्स कानून ने हमें दिए हैं, 6 आधारभूत या मूलभूत हमारे अधिकार हैं। मैं चाहता हूं आप उन एक्ट 2019 के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को पढ़ें और उन 6 अधिकारों को अच्छे से जानें। हम भी कंज्यूमर हैं, किसी और पद को ग्रहण करने से पहले। एक जो मेजर डिफरेंस 2019 के एक्ट और 86 के एक्ट में आया है, वो आया है कंज्यूमर के 6ठे मूलभूत अधिकार में। जहां 1986 का एक्ट कहता था राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, उसका एक मूलभूत आधार है, अधिकार है। 2019 कहता है राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस, उसका एक मूलभूत अधिकार है। एजुकेशन और अवेयरनेस में बेसिक डिफरेंस यही है, एजुकेशन अवेयरनेस का एक पार्ट है, अवेयरनेस का स्फीयर बहुत बड़ा होता है, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि भारत सरकार गाइडलाइंस लाती जा रही है। जैसे जैसे रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस या अनफेयर प्रैक्टिसेस निकल के आती हैं, पॉपुलर होती हैं, भारत सरकार तुरंत उसके निवारण के लिए गाइडलाइंस या स्पष्टीकरण के लिए गाइडलाइंस लाती है। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ क्रिएटिंग कंज्यूमर अवेयरनेस, एंड एज एन इंडस्ट्री हम सबका कर्तव्य है कि हम सरकार के साथ खड़े रहें और अपने कंज्यूमर, जो कि हमारी इकोनॉमी का बैकबोन है, उसका सुनिश्चित करें कि वो किसी प्रकार के दुविधा में ना रहे, किसी प्रकार के ग्रीवेंस में ना रहे। थैंक यू सो मच सर, एंड वी कीप disturbing you for your guidance in future also. Thank you so much, sir. So we are bringing this session to a close now.